I think Shoma asks the mother of all questions is, do the people of India care for freedom? Because if they really cared for freedom, there wouldn't be a discussion and a debate about freedom. I think the ball is in the court of the nation now. Because if you really care for freedom, then you will make freedom work for us. I don't think Rahul, me and Kamal Saab and my fraternity all over India have any illusions that we can make a content and see it through if it is subversive without the help of the people of India. Because always we have seen that whenever we have dared to go against status quo, we have had interest group taking us on, and it is then when we find that the timidity creeps in, and this very articulate, very vociferous middle class, which has an opinion on everything from disease to divinity, remains quiet. And that's when the filmmaker becomes cynical and feels that it's better not to make movies which are contentious in its nature, make movies which are happy love stories, which stay on, like toddlers, we remain on our knees and don't try to reach for skies. ओके एक बात जो है फिल्मों को देखकर लोग बड़े होते हैं, जनरेशंस बड़ी होती है, एट द सेम टाइम जो नई जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो फिल्म को देखकर इंस्पायर होते हैं, शायद बिगड़ते भी हैं. क्या तब वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं दुखी करती है? शोमा बताएगी. इसका जवाब शोमा देगी, वो औरत है. औरत है. No, I can't do that. Mahesh. नहीं, क्या सवाल क्या है? फिल्में देखकर लोग इंस्पायर होते हैं, बड़े होते हैं, जनरेशन चेंज हो जाती है, अपने आप को आइडलाइज वो किया जाता है. पर जो छोटी जनरेशन है, जो बच्चे हैं, कच्ची उम्र है जिनकी, उनके लिए वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भटकाने वाला भी बन जाता है. इसमें आपकी गलती नहीं, लेकिन इम्पैक्ट तो पड़ रहा है. देखिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिनेमा का असर यकीनन होता है, क्योंकि जैसे मैंने अपनी बातचीत में भी कहा कि जब मैं मुड़ के देखता हूँ तो हाँ, हमारी फिल्म जब हमने बनाई थी अर्थ, तो उसने महिलाओं में वो एहसास जगाए थे कि शायद वो मुमकिन है उनके लिए अपने पैरों पे खड़े होकर वो सपने देखना शुरू कर सकती हैं कि वो एक ऐसी दुनिया में जी सकती हैं जहाँ पर उनको मर्द को बैसाखी बना के इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा. मगर ये भी सच है कि सिर्फ सिनेमा को अगर आप दोषी ठहराएंगे कि हर बुराई जो समाज में आती है वो सिनेमा के कारण ही आती है, ये भी इसका एविडेंस हमें मिला नहीं है. जिस दिन मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ, जिस दिन हमारे बिरादरी को ये एविडेंस मिल जाएगा कि हमारे फिल्मों की वजह से समाज में जुल्म हो रहा है या अत्याचार हो रहा है, तो हम यकीनन ये ऐसी फिल्म बनाना छोड़ देंगे. मगर फ़िलहाल ये सिर्फ अजम्पशंस हैं, और इस अजम्पशंस के पीछे जब तक एक लॉजिकल माइंड नहीं काम किया हो, तब तक हम उसको कैसे मानें. कमल सर, आपका क्या कहना है इसी टेक पे? आप क्या कहना है? Of course, recently you have kind of faced a lot of difficulties releasing your film. On DTH. Today in this discussion, did you see some solution coming out, or you feel that filmmakers, artists should now try and curb their freedom of expression and no, you've said all the answers. So do you have a question? Okay, now one correction in your question. It's not recently. It's not just Kamal Hassan. It's been happening over and over to not only me, to other people. Let me not make it into an individual experience alone. It has to be a collective experience, and as Mr. Bhatt said, it has to be a national social experience, and you must be angered as I am. You don't have to suffer the same indignity or loss of money to make your own. कमल सर, आपसे सवाल है कि क्या आप मानते हैं कि बॉलीवुड पर हॉलीवुड का ज़्यादा इम्पैक्ट है? जैसे कह सकते हैं कि बुखार है कि अगर हॉलीवुड से कोई भी स्टार आता है, नहीं, ये बुखार even France is complaining about it. So it's not that, don't blame just Hindi cinema. I hate the word Bollywood because that is bad influence. ओके, अगर यही बात आम सवाल जो आप जब हुए थे तब की गई थी, हम बहुत बार हॉलीवुड से कंपेयर करते हैं, हम क्यों कंपेयर करते हैं? आपका क्या कहना है इस बारे में? I don't know. You think Wall Street and then you think Hollywood. You don't have to think that way. I mean, you can be world leaders if you become the change that you want. And actually, if you don't mind me saying this session was about censorship, and I think particularly in the media, we need to be interested in the issue of censorship. You have these people standing here, we need to be asking
how can we expand the zone of freedom in India, you know, and it must be not just for Mr. Kamal Hassan, as he's been saying repeatedly, but for everybody, you know, and the point is that we have to, if we don't like the cinema they make, we can criticize it. We have to have a culture of criticism around our art, which we don't have today. We only discuss how much money they make. We never discuss whether it's good cinema or bad cinema. But I think as a media, we must come to a position where we will stand up collectively, artists and media, for everybody's right to express themselves, particularly in the artistic zone. The political arena is another one, more complicated discussion, but where art is concerned, if you like a movie, watch it. If you like a book, read it. Otherwise, kill them with the absence of your audience-ship. You know, they won't make money, so they won't make that cinema. But that's the only censorship that we should allow in our country. And I think we need to ask those questions. महेश सर, आप दोनों का रिएक्शन जानना चाहूंगी कि जैसे सेंसर बोर्ड ने अब ए सर्टिफिकेट दिया है आइटम नंबर्स को कि अगर 18 इयर्स के कम बच्चे हैं वो प्राइम टाइम पर आइटम नंबर्स नहीं देख सकते, जैसे कि अगर गाने में कुछ वैलिटी अगर फिल्में टीवी पे आ रही हैं, टेलीविजन नहीं, इस इशू पे काफ़ी कंफ्यूजन है। अभी हमारे जो मुंबई के जो आरओ हैं उन्होंने कहा कि ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन जो हमने तो नहीं दिया है, मगर कुछ आवाज़ें ऐसी भी हमारे कानों तक आई हैं कि ऐसा हुआ है। मगर इस पे हमने फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड ने मिनिस्ट्री को लिखा है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ये अन्याय होगा, क्योंकि ये कौन तय करेगा आइटम सॉन्ग क्या है। और ये आइटम सॉन्ग आज तो नहीं है, ये हमने तो अपने बाप दादाओं से हासिल किया है। और ये अचानक अगर आप क्रिकेट खेलते खेलते हॉकी खेलना शुरू कर देंगे तो फिर हम कहेंगे ना कि ये फाउल है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी फिल्में ऑलरेडी जो है पाइपलाइन में हैं, जो बन चुकी हैं, तो उनका और वो शायद वो गाने इसलिए अपना वीव करते हैं अपनी कहानियों में ताकि उसका प्रचार करें। तो अगर आपको इसको निकालना है तो फिल्म इंडस्ट्री जो स्टेक होल्डर्स है उनको भागीदार बनाना पड़ेगा, उस पर एक डिस्कशन होगा। और फिल्म अगर आवाज़ें हमारी आएगी कि नहीं हमको ऐसे गाने नहीं बनाने चाहिए तो हम नहीं बनाएंगे, मगर सडनली नहीं आप सोच सकते हैं। और ये इतना नैरो डेफिनेशन है कि आइटम नंबर लोगों को बिगाड़ते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो इतने सारे जो रियलिटी शोज़ है, डांस शोज़ है, आइटम नंबर्स, डांसिंग से, सिनेमा की म्यूज़िक से इतना सोशल मोबिलिटी बढ़ी है, लोगों को दुनिया एक्सपैंड हो गया है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी नैरो वे टू लुक एट। अगर हमको कुछ हिचकिचाहट होनी चाहिए, इट शुड बी अबाउट कि हम महिलाओं को दिखाते कि उनका कोई भी अपना बल नहीं है। आई थिंक वी कैन क्रिटिसाइज दैट मोर। अगर उनका अपना इच्छा है टू शो देयर बॉडीज, टू एंजॉय देयर बॉडीज, हम कौन होते हैं उसके ऊपर पुलिस बनने के लिए? एंड आई थिंक दैट्स अ रियली नैरो वे। No. Also, I'd like to add last question. No, this thing about item number and all that, a repressed adult society seeks these kind of entertainment, and you give it to them. There was a censor board chairman, Mr. Goldie Anand, who said, allow X-rated films. He was removed from the job. But what is happening is, since we're not allowing it, it's slowly, cleverly subverted and interpolated into a film that our children see. Mr. Hassan, Last question. फिल्म्स बनाते रहे हैं, उनको डीटीएच जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पेश कर रहे हैं, क्या ये ट्रेंड जारी रहेगा और कुछ नए प्लेटफॉर्म्स पर भी रिलीज देखने को मिलेगा? That's totally a different field of things we should have. Listen, we've been having it since Hey Ram and even before that. The mode of expression of your filmmaking itself has been evolving. Right now, we see a Vishwarupam, it's far more brasher than your films in the 80s, and probably you tackle far more complicated things in the 80s than now. Why do you think the censorship is such a big issue? I think even censor board, the kind of films we're releasing, you see visuals which you don't used to witness, say, 10, 15 years ago. Even the rules have been relaxed of sorts. No, it's not been, they've relented, they've not relaxed. And that means we are keeping the pressure on. And as he said, it's a status quo that will have to be there constantly. We'll have to be questioning, criticizing each other. It's work in progress. It's not complete. Would you face a Vishwarupam? Would you do another film like that? We are going to be doing Vishwarupam sequel part 2. It's coming up. Thank you. Sir, don't you looking forward? Mr. Hassan, don't you think censor board? Do you think more and more new kind of platforms will be there, will available? There will be, but we'll talk about what we do. Vishwarupam 2 will be in RO 3D. There's a demo here. Go see it. Thank you very much.